नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं विपिन बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर, उसका ओरिजिन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। साथ में सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, हमारी जो है ईएसई मेंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ मेसनरी मैसनरी पियर 4 by 5 meter square supports a vertical load 80T as shown। फिगर गिवन है, मतलब कि पहला फाइंड करना है, जहां पे हमें फाइंड द स्ट्रेस फाइंड द स्ट्रेस एट ऑल 4 कॉर्नर ऑफ द पियर। सेकेंड वन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एडिशनल load that can be applied at the center of the pier so that there is no tension anywhere in the section of the pier। तीसरा पॉइंट, what are the stresses, what are the stresses developed at all the corners with the additional load at the center। चलिए, डायग्राम सबसे पहले आपको दे देते हैं। आर्सेनल पूरा भरा होना चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप। नामकरण कर दो भाई साहब, ABCD। सेक्शन है आपका क्या क्या, XX एंड YY। सेंस 2/2। हाफ किया हुआ है, 2.5, 2.5 मीटर। ये डायग्राम हो गया।
लोड जो है आपके पॉइंट पे लग रहा है। वन पॉइंट फोर मीटर, 1.2 मीटर, विच इज 803। चलिए स्नैप ले लीजिए, फर्दर मूव अहेड करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखेंगे हमारे एरिया ऑफ सेक्शन विच इज 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर। सेक्शन मॉडुलस z इज इक्वल टू I बाई वाई विच इज हेयर 5 × 4 का स्क्वायर बाई 6 PD स्क्वायर बाई 6 आपका जो है रेक्टेंगल के लिए होता है, हमें याद है, ध्यान है। तो 33.33 मीटर क्यूब, ये आपका जो है एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट है सेक्शन मॉडुलस। यही जो है हम आपके वाई वाई एक्सिस के अराउंड लेते हैं। तो ये हो जाएगा विच इज 4 5 स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 16.67 मीटर क्यूब। यूनिफॉर्म लोडिंग कंडीशन, तो here द स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड पर यूनिट एरिया P/A 80/20 विच इज +4 P/मीटर स्क्वायर, कॉम्प्रेसिव इन नेचर। इसेंट्रिसिटी, एक्सिस की m/z, ये एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट 80 × 1.2/13.33 के हिसाब से आ गया +7.2 P/मीटर स्क्वायर। एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी, देन वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी लोड। तो m/y/z/dy, so here we have 80 × 1.4 division over the 16.67 easy. So here we have the loading condition is to be plus 6.72 P/मीटर स्क्वायर, राइट। पहला वाला ए बी जो है कंप्रेसिव देगा और सी डी जो है टेंजाइल देगा, देन कंप्रेसिव बी सी देगा एंड टेंजाइल ए डी देगा, इस हिसाब से है। तो रिजल्टेंट निकाल देते हैं स्ट्रेसेस आपके जो है ना। सिंपली जो है आपको किस हिसाब से देखना है, अगर देखोगे तो किस हिसाब से देखोगे साथियों, बंधुओं, बताओ। देखना है गुरुजी इनको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। चलिए तो यहाँ पे स्ट्रेसेस इन ए बी सी डी, ये देखने में क्या मिलती हैं। स्ट्रेसेस एट ए +4 +7.2 -6.72, so here it will come 4.48 P/मीटर स्क्वायर, compressive in it. Next move ahead, +4 +7.2 +6.72, so here we have 17.92 P/मीटर स्क्वायर, same compressive nature. Third one, +4 -7.2, क्या हो जाएगा, +4, देन आफ्टर
minus का 7.2, then after plus 6.72, 3.52 T per meter square compressive. Same result. Last one, plus 4 minus 7.2 minus 6.72. Here it comes minus 9.92 T per मीटर स्क्वायर. देखो अमूमन जो है ना हम इसेंट्रिक लोडिंग वाले जो है क्वेश्चन जो है ड्रॉप आउट कर देते हैं, बट हु नोस, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला पूछ दे एग्जाम में और हमारी किस्मत चमक जाए क्योंकि हमने लगाया हुआ है. नाउ सेकेंड वाला बी कंडीशन बोल रहा है, आपने को देखना है जो जिसके हिसाब से कितना जो है एडिशनल लोड रिक्वायर्ड होगा रिजल्टेंट के लिए. तो यहाँ पे टोटल जो है सबसे लोएस्ट वन वाला -9.92 है और लोड की वैल्यू 20. सो एडिशनल लोड रिक्वायर्ड क्यों, क्योंकि पूरी तरह से टेंजाइल नहीं, विच इज प्लस 9.92 मल्टीप्लाइड विथ 0, इट गिव्स द वैल्यू ओवर दी प्लस का 198.4. now for the move ahead additional load at center, additional load at center. Now calculate, press at A, B, C, D पे. आइए देखते हैं. प्रेस एट पॉइंट ए, तो वो नर्चर करेंगे 4.48, then after 9.92 which is 14.4 T per meter square compressive one. Further 17.92 9.92 is equal to 27.84 T per meter square compressive one. Next part 3.52 9.92 is equal to 13.44 T per meter square is in compressive, and the last one fully sigma t minus 9.9 plus 9.92, it gives the value of शून्यम 0. ठीक है, ये पूरा सॉर्ट आउट हो गया, सॉर्ट आउट हो गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है अ क्लोज कॉइल helical spring is having a stiffness is having a stiffness of 1515 Newton per millimeter. Its length is 100 mm when it is fully when it is fully compressed and
and the adjacent coils are touching each other, touching each other. The modulus of rigidity, the modulus of rigidity, the modulus of rigidity of the spring is 0.8 into 10 raised to power 5 Newton per millimeter square. फर्स्ट कंडीशन दे रहा है, डिटरमाइन द वायर डायमीटर, डिटरमाइन द वायर diameter and diameter of main coil and diameter of main coil if their ratio is if their ratio is 1/10. सेकेंड पार्ट बोल रहा है, if the gap between adjacent coil, if the gap between adjacent coil is 0.3 centimeter, what maximum load can be, what maximum load can be applied applied before the spring becomes solid, spring becomes solid. Therefore the adjacent coils, therefore adjacent coil H. Now next one, थर्ड वन क्या कैलकुलेट करा रहा है आपसे, what is the corresponding, what what is the corresponding maximum shear stress, maximum shear stress in the spring, right? चलिए देखते हैं, स्प्रिंग का क्वेश्चन है, तीन पार्ट इनके देखने हैं। सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं कुछ कुछ। स्प्रिंग कांस्टेंट के 15 न्यूटन पर एमएम, कंप्रेशन के बाद सॉलिड लेंथ जो है उसकी बन रही है 600 mm, की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हमको डायमीटर रेशियो है हमारे पास स्मॉल डी बाई कैपिटल डी 1/10। हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी इक्वेशन होती है
कौन सी इक्वेशन स्प्रिंग के लिए? A इज इक्वल टू GD4/64 R³ N। डायमीटर के टर्म्स में डिफरेंट होती है, 2R रख दोगे, 2D रख दोगे तो आराम से आ जाएगा। 8 GD4/16 D³ N 0.8 इंटू 10⁵ इंटू D4/64 इंटू R³ टाइम्स N। नाउ सॉलिड लेंथ के लिए is N times D। 600 is equivalent to N times D equal to N बराबर 600/T। चलिए put these value। now put this value, so we have the D4 is equal to 12/10³ multiplied with R³ into 600/T। टोटली अगर मैं T देखूंगा 30 mm आ जाएगी वैल्यू, और कैपिटल D का 10 टाइम्स D विच इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जब मेरे पास स्मॉल d टू द कैपिटल D का रेशियो 1/10 गिवन है ऑन द पर्टिकुलर वन। ठीक है, नाउ फर्दर मैं मूव डाउन करता हूँ स्टेप्स को, तो मेरे पास टर्न्स निकालने को बोल रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 600/d। 600/30, it gives the holy cow 20 turns। now between the coils, gap between the coil which is 0.3 centimeter, which is 3 millimeter। now total gap between the coil is to be gap between two adjacent coil into number of turns, which is 3 times of n, total gap। now maximum compression on this particular case, जब जो है ना हमारा स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस होगा और कोई भी गैप नहीं होगा, उस कंडीशन में 3 into n which is 3 times of 20 gives the value of 60 mm। हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि नहीं कि A is equal to लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन 15 बराबर W/8। तो here W is equal to 900 न्यूटन हमारा लोड आ जाएगा। राइट, दूसरा सेगमेंट भी डन। नाउ फर्दर तीसरा वाला, थर्ड वन, ब्रेक अपार्ट। तीसरा वाला है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है 16T/5 टाइम्स D³। तो हियर वी हैव 16 गुणित WR/5D³। तो पुट दी वैल्यू 16 into 900 into 150 division over the 5 times 30³। tau is equal to 25.465 Newton per mm square। राइट, यहाँ पे R बराबर है 30/2 is
15 centimeter equal to 150 mm. All right, now now नहीं रखते हैं हम अपने सेशन को। आप लोग को एक काम करना है, क्या? पीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पेनिट्रेट करना है। इसी के साथ साथियों, जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।